Hello students, welcome back to our English class. I hope all of you are doing well. Today we have got our worksheet for English, worksheet number 6. Based on the chapter, How the Dog Found Himself a New Master. So students, हमने इस chapter से related बहुत सारी worksheets की हैं where we saw that the dog went out in search of a master. हमने पढ़ा था कि डॉग जो है अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढने के लिए निकला था where he wanted a master who was strongest of all. जो सबसे strong हो ऐसा मास्टर उसको चाहिए था. And we also saw कि सबसे पहले वो कहाँ गया था? वुल्फ के पास. उसके बाद he went to the bear. Yes. And then he went to the lion. And finally he went to man and found, उसको मिला, the man was the strongest. Man सबसे strong था. And that is why he made man his new master. So students, जो ये story है, इसी पे based आज हमारा question है, आज हमारी worksheet है, where we have to summarize the story. We have to write the summary of the story. Summary होती है जब हम story को short करके लिखते हैं कि क्या क्या उसमें हुआ था. That is the summary of the story. So let's start doing. This is the story of a, ये किसकी story है? Lion, man or dog? किसकी story है? Yes, this is the story of a dog who used to be, वो क्या था? अपना खुद का मास्टर था या who used to be very happy? Yes, who used to be his own master. He decided to find a master who was, उसने क्या सोचा कैसा मास्टर उसको चाहिए? टॉलर चाहिए, सबसे लंबा होना चाहिए या सबसे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए? यस, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स. सो आप ये वाला आंसर यहाँ पर लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स. ओके, देन फर्स्ट ही फाउंड अ डैश. सबसे पहले फर्स्टली where did he go? He went to the wolf. So this is the answer. But the wolf was afraid of the bear. Yes, the wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was the strongest of all or largest of all. Yes, he thought that the bear was the strongest of all. Dog को लगा कि bear सबसे strongest है. After some time, the dog met a dog. किसके पास गया? After the bear, the dog met a lion who seemed to be the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was more powerful than man or afraid of man. Lion was yes. What will come here? More powerful or afraid? Yes, he found that the lion was afraid of man. So to this day, the dog remains man's best friend. So students, this way you will complete this worksheet. You will write all the correct answer in the blanks. Okay? So we move on to the next part. So here we have to revise the words from the story, the difficult words. So let us find out what's the first word. The first word is dared. Daring. Have you heard of the word daring? Daring means to be brave.
हिम्मत करना, कोशिश करना, टू बी ब्रेव इनफ, बिल्कुल नहीं डरना, brave, that is called brave. So daring or dared is to be brave to do something. Okay, हमें brave बनना, कोई भी काम करने के लिए when we are brave enough, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं किसी से, that is called dared. Okay, second word is kinsman, which means a relative. It's a very old word. अभी we rarely use, हम कम use करते हैं, but kinsman used to mean relative या फिर कोई रिश्तेदार. Okay, the next word is fierce means violent or frightening, यानी हिंसात्मक, anything that is violent या फिर जो हमें बहुत डरावना हो. For example, we can say a lion is a fierce animal, right? Fearful or is fearful, we can say हमें बहुत डर लगता है, बहुत डरावना होता है, fearful होता है. Okay, the next word is darted means moved quickly. Okay, कोई भी चीज़ जो बहुत तेजी से आई हो, that is called darted. The next word is cliff means a steep high rock, कोई बहुत बड़ी चट्टान, steep काफ़ी ऊंचाई पर जो हो. ओके, दैट इज अ क्लिफ. एक चट्टान, पहाड़ की बात नहीं कर रहे हम, एक चट्टान की बात कर रहे हैं. स्टीप ऊंची, मतलब जो शार्प हो, जिसकी चोटी ऊंची हो, दैट इज अ क्लिफ. ओके, वॉन्डरिंग, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमना या ट्रैवल करना, दैट इज वॉन्डरिंग. ओके, so this is our next part, students. What we have to do here is, जो भी अभी हमने 6 words रीड किए हैं, हमें उन वर्ड्स को इस क्रॉसवर्ड में फाइंड आउट करना है. ओके, फाइंड आउट करके सर्कल करना है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो पहला वर्ड हमने पढ़ा था फियर्स, सी इट इज़ गिवन फियर्स. बाकी सारे वर्ड हमें ढूंढने हैं. कौन कौन से वर्ड्स थे? किन्समैन, वॉन्डरिंग, क्लिफ, darted, and one more is left. What was that? Dared. Yes, you have to find out these 5 words. So जब आप ढूंढना शुरू करेंगे, you will find out the words like this. This is the word dared, kinsman, wandering, darted, and cliff. और fierce तो हमें पहले दिया ही हुआ है. Okay, so this way our exercise, our worksheet will be complete. Okay, students. So students, today at the end of our worksheet we have an important CAB message. What is CAB? COVID appropriate behavior. Okay, COVID appropriate behavior is कि हमें अभी कोविड के टाइम में कैसा बिहेवियर हमें करना चाहिए. So a very important part is given here. Keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. At least 6 feet का distance हमें आपस में maintain करना है. So that is a very important tip given. So do follow this and complete your worksheet. Okay.